टॉप कंपनीज और ड्रीम कंपनीज डू, क्योंकि गूगल का भी अगर आप फर्स्ट राउंड से पहले ही आपका जब एक रिक्रूटर कॉल होगा, दे बेसिकली सेंड यू अ लॉट ऑफ मटेरियल और बहुत सारे होंगे। इवन इसमें आप कुछ यूट्यूबर्स को भी जिनसे आप पढ़ रहे हो उसमें उनके भी लिंक्स होंगे। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट्स। आज हमारे साथ है आजाद अली। ही वाज माय कॉलेज जूनियर एंड ही इज फ्रॉम एनआईटी सिलचर। रिसेंटली इन्होंने मेटा में इंटरव्यू दिया था फॉर जॉब, तो हम लोग इनसे ही जानते हैं इनका इंट्रोडक्शन और इन्होंने कैसे अप्लाई किया था। सो आजाद, टू यू नाउ। Yeah, so my name is Azad Ali. Currently, I am pursuing computer science and engineering from National Institute of Technology, Silchar. I also hold an offer from Amazon as an SD intern. Got rejected from Meta. I tried to apply in Meta through their website portal. First, I got rejected from their website, but then after some time, another recruiter from Meta London texted me in mail and asked me if I would love to apply for another job opportunity, which was open in Meta London, and it was for front-end engineering intern. So moved forward with it and it was a great experience. So आजाद, अप्लाई कैसे किया था? मतलब ऑनलाइन पोर्टल पे, मेटा के पोर्टल पे या? हाँ, I got to know about the opportunity through LinkedIn and फिर मैं उनके खुद के ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई किया था and after applying I got the revert back mail after 1 month from them. ओके, बढ़िया। तो ये कब की बात है, मतलब ऑलमोस्ट किस टाइम पे अप्लाई किया था? So I applied in December, but I didn't hear from them until January. And after January, I got to know that the position was fulfilled by someone else, so I won't be able to sit for it. ये प्लानिंग से अप्लाई किया था या ऐसे कि हाँ मतलब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई कर दिया वाला सीन? No, it's kind of like Meta is dream job for everyone, right? So I was like, कि opportunity है तो apply क्यों नहीं करे? So then I applied for it. Okay, so you prepared for the opportunity या मतलब? No, I was holding offer from Amazon, but then I got to know about the opportunity and I was curious to join Facebook. So I was like, I will prepare for it if I get shortlisted. I applied and. Right. So okay, now coming to the total number of rounds. कितने rounds थे वहाँ पे? Total number of rounds were 3. First, there was a recruiter call. Once you pass through the recruiter call, you will get 2 technical rounds. Both of them were mostly based on your DOM manipulation and data structure and algorithm. DOM manipulation का मतलब आप बता दो जरा एक बार सबको। DOM manipulation is in WebD. When you try to make some kind of website, you enter to a DOM, which is called document object oriented. You manipulate with it to do certain things in the page. So mostly the question were based on JavaScript and DOM. So पूरा का पूरा जो इंटरव्यू था, पूरा प्रोसेस था, सारा को सारा फ्रंट एंड का ही था ऑलमोस्ट, जिससे पता चल रहा है। क्या ज्यादा पूछा गया, मतलब क्या क्या चीजें ज्यादा पूछी गई, फ्रंट एंड, बैक एंड या डीएसए पूछा गया? क्योंकि मेटा था तो ऑब्वियसली थे आजकल लॉट ऑफ डीएसए वी एक्सपेक्ट, ठीक है? तो क्या क्या चीजें ज्यादा पूछी गई, किस पे फोकस किया था आपने और क्या क्या करना चाहिए था? So the recruiters were really chill and they were really good. Mostly the focus were 50-50 DSA and the 50 were logic building and front end part where you have to code in JavaScript. It was specifically told to us that you can't code in any other language rather than JavaScript. You have to solve the DSA question also in JavaScript and the other part of the front end questions in JavaScript too. And the questions were quite logical and like really tricky to be honest. तो ओवरऑल, क्योंकि गूगल में एक्चुअली क्या होता है, वो ओवरऑल पहले पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करते हैं, इंटरव्यू किस किस बेसिस पे होने वाले हैं, उसके बाद वो आपको थोड़ा सा टाइम भी देते हैं इफ यू नीड फॉर द इंटरव्यू। तो वैसा प्रोसेस हुआ था यहाँ पे या थोड़ा सा डिफरेंट था जब कॉल आया था रिक्रूटर का? लाइक फर्स्ट यू गॉट? Yes, it was quite similar. They first had a call with me and talked about the opportunities and asked me certain questions regarding my behavior, project, hackathons, and competitive coding too. And hiring manager called me after the next day and told me that I was shortlisted for the interview. बट गूगल के प्रोसेस में थोड़ा सा काफी चीजें बहुत अच्छी होती हैं बिकॉज दे पर्सनली कॉल यू और वो डिस्कस करते हैं कि कितना लेवल तक आपकी प्रिपरेशन है और वो हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, सो वेदर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो आगे बढ़ते हैं कि आपने कॉलेज में क्या क्या प्रिपेयर किया था, मतलब डीएसए पे फोकस किया था, फ्रंट एंड फोकस किया था या क्या क्या चीजों पे फोकस किया था? So mostly I was more passionate about front end from the start only. So I was mostly doing front end part, but then I got to know in the middle of second year that data structure is really important to get an internship at any company if you're aiming big. So then I started doing data structure and algorithm after my third sem. When I got the opportunity from Amazon, again I shifted to front end. तो हम लोग राउंड बाय राउंड डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आपका जो राउंड था रिक्रूटर राउंड, उसमें बेसिकली क्या क्या डिस्कशन थे? कॉल पे डिस्कशन हुआ, आई थिंक ओवर फोन कॉल, राइट? Yes, over a phone call. So they discussed about how hackathons I have participated, projects I had. They asked me some technical questions related to JavaScript, check my ability to understand things. The questions were quite deep in JavaScript. They even went into closures and asked me such deep questions like inline caching and even questions on JavaScript compiler.
after all this, when I got shortlisted from them, they even sent me multiple resources to study from. Like they literally sent me so many resources that I was overwhelmed. दिस इज व्हाट टॉप कंपनीज और ड्रीम कंपनीज डू। गूगल का भी अगर आप Yes. फर्स्ट राउंड से पहले ही आपका जब एक रिक्रूटर कॉल होगा, आफ्टर दैट इवन दे बेसिकली सेंड यू अ लॉट ऑफ मटेरियल, और बहुत सारे होंगे इवन उसमें आप कुछ यूट्यूबर्स को भी जिनसे आप पढ़ रहे होगे उसमें उनके भी लिंक्स होंगे। Yes. राइट, सो राउंड बाय Yes. राउंड डिस्कस करते हो। तो पहला आपका जो है रिक्रूटर राउंड था वो कितना देर तक वो ओवर कॉल डिस्कशन चला था? It didn't took much of time. It took me around 15 minutes with the recruiter. राइट, बेसिक डिस्कशंस होते हैं। राइट, आफ्टर दैट देन द टू टेक्निकल राउंड, सो वन बाय वन कवर करते हैं। सो गो अहेड विद द फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। The first interview, I chose it after 15 days of my present date. I prepared rigorously for front end. I even got to know some new websites regarding front end, and I solved lots of questions regarding front end. I think you And can when mention the that, Azad, technical- because it will help a Yes. lot of people. So there is a website called bigfrontendengineer.dev. It is made by a guy who personally manages it, and it has like really beautiful questions on JavaScript, like real beautiful questions. When I went to the first interview, the guy was super chill and he made me feel really comfortable. And after that, he started asking me some basics questions of JavaScript to make me feel more like, to get me a little bit of confidence regarding the interview. And he asked me about closures, and then he went to event bubbling, how we can make the website more efficient using event bubbling. And after that, he gave me two questions. One was completely on data structure and algorithm. I had to lexically generate an string from the given string. It should be the lexically smallest string. The other question was to make an event emitter similar to the Node.js. Node.js has an event emitter built into it, and he asked me to make it by myself completely from scratch. Total length of interview क्या था? Time? The total length of interview was really short. It was 45 minutes for all the questions he asked me. So एक DSA क्वेश्चन हो गया जिसमें was around lexicographic string. There were the two JavaScript और front end क्वेश्चन। इन राउंड्स में कोर पे कुछ डिस्कशन हुआ क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें पे डिस्कशन हुआ? No. So it was more focused on front end and front end JavaScript specific, like Right. deep JavaScript knowledge. ठीक है, coming to the second round of interview, तो second में after how many days was scheduled and basically what all questions they asked? Again sent me an availability link to share with them. I again choose 17 days from the present day, and then I again prepared for the 17 days. Second interview was quite similar to the first one only, but the questions were different. This time the questions were more into deep front end questions. They asked me to make a React class name by myself from scratch. So I had to build the entire class name functionality by myself there. And they even asked me to make a function that is built in JavaScript called CLZ32. And it took me quite a time to understand what that function first does. So he gave me a hint that the function do some specific task. Once I got to know regarding the function, I started building it. I was unable to solve it completely, but I got the gist of it and solved half. And he was quite impressed with me. The interview went well. पर उसके बाद second round के बाद what was all your hope and what you think was the reason for not getting selected? So I was quite confident regarding the interview, and I was hoping that I will get opportunity. But then I don't know what happened. After 15 days, the recruiter texted me back asking that we need student visa, and it is really hard right now to get a student visa for people from India to UK. The delay will take enough time. We don't have that much of time. That's why we will be going forward with another candidate. Yeah. I was like, it's all right. But then I talked with the recruiter. She told me that she will refer me for a full-time opportunity next time. Quite happy that I will try full-time. तो नहीं बढ़िया, नहीं राइट काफी बुरा लगा होगा, मतलब you did all things और ये मतलब फाइनल चांस था कि हाँ मतलब हो जाता, बट ठीक है वो फाइनल पॉइंट नहीं बोलते हैं कि किस्मत ऑलवेज मैटर्स, इसी को बोलते हैं किस्मत मैटर्स। Luck is like part of it. राइट, ओके, सो व्हाट सजेशंस यू गिव टू एवरीवन, मतलब जिनको अप्लाई करना है, और क्या प्रोसेस जो होता है चलता रहता है और इट इज लाइक समथिंग कि हाँ इस टाइम पे दे हायर फॉर फ्रंट एंड और समथिंग लाइक दैट? So there is timing for like hiring front end engineering interns. Front end का opportunity ज्यादा टाइम नहीं खुला रहता. It is only in December and September के बीच में. So if you apply in between this time, then आपको opportunity का chance है. अगर नहीं तो then in future और वापस नहीं खुलता. ठीक है, तो फ्रंट एंड के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसको क्या क्या चीजें फोकस करनी चाहिए? For front end you have to just go into depth of JavaScript. JavaScript is a really complex language.
if you go into depth. But if you are like just doing from upar se, then it's okay language. So suggestion to follow resource for all these JavaScript and whatever. Akshay Seni. Like Akshay Seni is the best teacher for JavaScript. And then there are MDN docs. There could be nothing better than an MDN doc. MDN docs, nothing can be better. मतलब आप धीमे धीमे एक एक चीज समझोगे उससे. So yeah, MDN doc even have पूरा depth में compiler related knowledge if you wanna read. So now you are holding any full-time job, Azad? Yeah, currently I'm holding an opportunity from Amazon for SD intern. I'll be trying again for Facebook next year. Sure. So thank you Azad for joining us. It was a great session with you and a great point of discussion. बहुत सारी चीजें लोगों को जानने को मिलेंगी. तो आपसे कुछ चीजें भी. You were also inspiration अपने time में. राइट तो कुछ चीजें आपसे पूछनी थी. सो फ्रंट एंड अगर कोई बंदा स्टार्ट करता है फ्रॉम कॉलेज, लाइक ड्यूरिंग द इनिशियल मंथ्स ऑफ द कॉलेज, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, बेसिकली रिसोर्सेज क्या क्या वो फॉलो कर सकता है? So there is a really beautiful website as well as there has a channel called Free Code Camp. If you need any kind of courses, they have everything present in their YouTube channel called Free Code Camp. Just go into it, give time to HTML and CSS. It is really necessary if you want to pursue front end in future, because CSS is little tricky compared to any other language. Once you start building some complex animation, CSS will start eating up your head. Have a grab of CSS enough so that you can move into JavaScript. Whenever you get to know something new about JavaScript, just search into MDN docs, read completely about it. Then once you feel little confident about JavaScript, I myself is not confident about JavaScript. So then you move toward React. People also move toward Angular too. Once you complete React, you move to Next.js, and Next.js is like really fast framework if you want to work on it. And once you complete Next.js, then you are free to read JavaScript as much as possible, because JavaScript is really vast. So thank you Ajad for joining us. It was a great session. मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में. Till then, bye bye. Sure. सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो बाकी लोगों में. ओएस ग्रुप्स की प्लेलिस्ट आ चुकी है ऑलरेडी लाइव, और सारी चीज़ें जो भी कवर करेंगे हम लोग उसमें सारी इंटरव्यू से रिलेटेड होंगी, तो उसके लिए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मन में. और अगर अभी तक आपने जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे नोट, सारी चीज़ें, सारे इन्फॉर्मेशन वो हम लोग वहीं पे देने वाले हैं. और हम लोग संडे को लाइव भी आते हैं, कुछ अल्टरनेट संडेज में हम लोग लाइव भी आते हैं, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे ही आती है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट द न्यूटन स्कूल, सो न्यूटन स्कूल का जो फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम है दैट इज़ ऑलरेडी लाइव, तो रजिस्ट्रेशन उसके लाइव हैं, आप जाके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो. सो न्यूटन स्कूल क्या करते हैं, बेसिकली फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको मेंटर करते हैं विदाउट चार्जिंग एनी सिंगल पेनी, ठीक है. 6 मंथ आपको वो मेंटर करेंगे, उसके बाद आपको हेल्प करेंगे इन योर जॉब, ठीक है. एंड अनटिल एंड अनलेस यू गेट प्लेस दे आर नॉट चार्जिंग सिंगल मनी. और उनका बहुत ही अच्छी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, तो जाके एक बार उनकी वेबसाइट चेक करो. कोई भी डाउट आए तो व्हाट्सएप नंबर जो है उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.